Good afternoon, all of you. So great to be with you again, and hopefully for the last session of economic survey together. So, just to tell you why I have combined these two chapters, they will not be very important chapters from your exams point of view. Services is not very important, even though I've covered the trend. And trade, external trade, the main trends again will be important, which I will cover with you. Other than that, I will be bringing a specific video on new foreign trade policy. So don't worry about that. I am deliberately not covering it here because of course it is not a part of economic survey, but I will be bringing up a video on new foreign trade policy. So let's start our day then. Chapter 10, it begins with the introduction saying that COVID-19 pandemic, this was on services sector, mind you. So it begins with the introduction saying that COVID pandemic hurt most sectors of the economy, particularly, the contact intensive service sectors like tourism, that is what it was hurting. Tourism, retail trade, hotel. तो इसकी वजह से service performance declined. Service performance declined. But then there were other non-contact services such as information, communication, financial, professional, like say law, like accountancy. So all these services, and they remained comparatively resilient. They did comparatively better. But overall, if we look at the performance, this is what gives us the broad-based idea. If we look at the performance, you will be able to see we had one issue here. The first quarter and second quarter 2021, I'm sure you understand that was the COVID pandemic, lockdown, people in distress. The second problem we see starts happening here, again the decline, starting quarter 2, the Delta variant had hit us, and again the lockdown, and again some problem was observed with Omicron and all, and then the global system going down. Don't forget that. ये जो परेशानी आनी शुरू हुई, ये हुआ कि जो global demand गिरने लगा, global demand गिरने लगा क्यों? क्योंकि बाहर की इकोनॉमीज में हाई इन्फ्लेशन आने लगे. तो ये स्लो डाउन कोविड, ये स्लो डाउन कोविड, और ये स्लो डाउन एक्सटर्नल डिमांड. That kind of trend you can keep in mind. Overall, if you see, the pre-COVID level was this, and now we are slightly above the pre-COVID level. So that is some welcome change that, okay, in 2 years the economy went down and has at least come above the pre-COVID level. ये जानबूझ के ये वाले diagrams तुम्हें देता हूँ. अगर तुमने अभी तक देखा होगा prelims के oriented जब questions पूछते हैं हमसे, तो इसी तरह से ट्रेंड्स पूछते हैं. तो ये ट्रेंड्स तुम्हें याद रखना है, क्या बढ़ रहा था, क्या घट रहा था. सो इट्स मेनली द ट्रेंड्स दैट यू शुड कीप इन माइंड. देन if you look at the purchasing managers index, if you recall when I was teaching you industry, then also I had taught you purchasing managers index is created by surveying the people who are in this business and asking them about their future prospects and the orders they are receiving and what they foresee the future. If it is below 50, then it shows some recession. It shows that you expect something to be going down. And if it is above 50, which we have seen it consistently after the previous Omicron wave. At the moment also we are in another Omicron wave. ये अलग बात है कि हम लोग Omicron को वैल्यू नहीं दे रहे हैं. कल कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि बिहार में और यूपी में Omicron को खैनी के नीचे हाथ में मसल के मार दिया. तो ऐसा कुछ हो रहा है भारत में अब शायद. लेकिन एंड ऑफ द डे ये अभी दिल्ली में भी 26% का पॉजिटिविटी है, लेकिन ऐसा कुछ मार्केट को देख के फील नहीं हो रहा. So maybe because it is not as bad or as fatal till now as what Delta variant was. So fatality, of course, and then hospitalization, they all matter a lot. So due to that, maybe some recovery has been seen. And even now, this graph has shown an upward tick itself. So just keep in mind that every time there has been a COVID wave, there has been a downtick and then an uptick after that. Similarly, if you look at credit offtake by the service sector, that is growing in double digits. ये यहाँ खराब था फिर. Credit offtake का importance क्या है? Credit offtake का मतलब more bank credit implies more capacity expansion and therefore
more business growth. More bank credit implies more capacity expansion and therefore more business growth. And that's another thing that we have seen happening when it comes to service sector in the recent past. That capacity expansion has been good, services have been doing good, better. Good afternoon everyone joining me now. Then if you see, service exports ने एक tremendous growth दिया है इंडिया को in terms of the receipts we have received. So if you see, service exports have been consistently above service imports, creating a trade surplus in services. Service exports have been consistently above service imports. In fact, now we have had a record-breaking service exports this year, and service imports have been relatively lesser, so around $323 billion of service exports, while service imports have been around $180 billion. So there has been a surplus on services in visible trade by more than $140 billion. तो तुम्हें याद क्या रखना है? Total service exports $323 billion and surplus on invisible trade greater than $100 billion. One of the biggest reasons that the current account deficit has been kept in check in spite of high goods trade deficit. भले ही हमारे commodity trade पे deficit high रहा है, लेकिन फिर भी current account deficit नहीं बढ़ा बहुत ज़्यादा, क्योंकि service exports जो है वो service imports से काफ़ी ऊपर रहे. So this is the trend that you need to keep in mind. Then if you see FDI in services, first good news is that in 2022-23, India received almost $85 billion FDI, and $7 billion FDI equity inflows happened in services sector. And this is mainly because of insurance receiving a lot of equity and information technology sector receiving a lot of equity. अगर कभी हमसे सवाल पूछें कि वो कौन से दो सेक्टर्स हैं जहां इक्विटी ज़्यादा आई है, तो इंश्योरेंस में इक्विटी ज़्यादा आई है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इक्विटी ज़्यादा आई है, क्योंकि इसमें इजी एंट्री कर दिया गया है. अप टू 74% FDI is now permitted in pure insurance. I hope you would recall, ये हम पिछली क्लासेस में भी बात कर चुके हैं. और जो प्योर इंश्योरेंस नहीं है, जैसे इंश्योरेंस ट्रेडिंग, इंश्योरेंस ब्रोकरेज एंड सो ऑन, उसमें तो 100% FDI अलाउड है. So apart from insurance business, in trading in insurance, brokerage in insurance and all, 100% FDI has been permitted. And ease of doing business, that is faster clearance, has been given. Industry has been given further impetus with digitalization and digital insurance becoming very popular. And then the dynamic needs of the industry, like allowing for insurance for many products, not only commodity, not only life, but allowing for insurance for many products has also been now picked up. So there are various issues, various contents, if you see, that we see under insurance development in India. Another thing that we see, major services subsector wise, उम्मीद मुझे बहुत कम है कि ये चीज़ कवर होगी आपके प्रीलिम्स में या मेंस में, बट एक ट्रेंड आपको बस आइडिया रहना चाहिए. आइडिया बस सेम है. फिर जो एवरेज होटल ऑक्यूपेंसी रेट है, अगेन जिस समय हमने कोविड का अटैक देखा है, उस समय ये लो हो जाता है, whether it is the beta variant, delta variant, omicron variant, and otherwise we have seen it to be comparatively high. The good news again is that in terms of occupancy, we are almost getting back to the pre-COVID levels for hotels. बस इतनी ही बात याद रखनी है, that the hotels remained below the pre-COVID level last 2 years. Now it is going almost at the pre-COVID level. And similarly, the room rents and room occupancy is for the first time now going above pre-COVID level after November 2022. बस ये छोटी छोटी दो बातें याद रखनी है कि होटल बिजनेस वापस वहीं पहुंचा है जहां कोविड के पहले था. मतलब ग्रोथ तो नहीं हुआ 2020 के मुकाबले में, लेकिन कम से कम वहां वापस पहुंच चुके हैं. So that's the only thing you need to keep in mind. For tourism, the foreign tourist arrivals have now still not come back to the percentage levels, have still not come back to the pre-COVID level, but still it is comparatively better than this zone where we saw hardly any tourist arrival in India. So if you look at it, things have again gone comparatively better here. So tourist arrivals are picking up.
which can again show good signals, because India is a country which can thrive very well as more and more tourists come over to our country on a monthly basis. Then of course, in budget also we have discussed it, that we have to make India an attractive destination for tourism. यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, याद भी रख लेना इसको, that combine this page, ये जो slide है, combine it with budget discussion. इस स्लाइड को बजट डिस्कशन के साथ कंबाइन कर लोगे जब पढ़ोगे तो, क्योंकि इस पे मैंने तुम्हें बस कुछ प्रोग्राम्स लिख दिए हैं, जैसे एक नेशनल इंटीग्रेटेड डेटाबेस बनाया हमने ऑफ हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, सो दैट देयर कैन बी बेटर आइडिया ऑफ वेयर वी आर गेटिंग मोर टूरिस्ट, विच काइंड ऑफ सर्विसेज आर मोर डिमांडेड बाय टूरिस्ट, विच एरियाज आर रिसीविंग मोर पीपल, दैट काइंड ऑफ थिंग वी विल स्टार्ट गेटिंग अक्रॉस. Then system for assessment, awareness and training for hospitality industry has been brought in. So now computer portals have been developed and real-time information is being shared so that everybody would know how to go ahead and target tourists. Regional connectivity scheme, Udan, Ude Desh Ka Aam Nagrik, small regions, small cities connected by aircrafts, airlines, and that results in creating more employment, better business, as well as higher tourism. And then of course, loan guarantee scheme for COVID affected tourism service sector. So up to 2 crore loans, rupees 2 crore loans given without any collateral, where the collateral is guaranteed by Government of India. Tax collection for insurance has been removed. I don't think it will affect tax coverage much in future, insurance coverage, because people should be educated that insurance should not be taken for tax protection. Insurance should be taken for your own benefit, and that kind of support is being given to insurance industry. So I think Indian system is changing, and I will be proven right. Believe you me on that. तुम अगले साल के insurance coverage data इंडिया का देखना, इस साल से काफी ऊपर रहेगा फिर भी वो, क्योंकि अब भारत में बहुत लोग कॉन्शियस हो रहे हैं कि इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं होता, इंश्योरेंस टैक्स बचाने के लिए नहीं होता, इंश्योरेंस प्रोटेक्शन के लिए होता है. So that is the message we need to give our people, that insurance is not to protect from tax, insurance is not to invest, but insurance is to protect from uncertain situations. So I am very hopeful that this will not have a major impact across. I hope Saurav, I could answer your question. Let's see this. Real estate is another sector. Again, during pandemic, there were project delays and big ticket purchases were deferred, property prices stagnated, work from home models. This was one wrong factor. These are factors that created a problem in real estate. So problem one was due to this. Problem two was work for home meant that the demand for office space went down. And this is a solution that is being seen, that with Real Estate Regulation Act and with more formalization of industry, we see that again in the last couple of quarters, the real estate has gradually started making a comeback. Alright, तो Real Estate Regulation Act और थोड़ा सा real estate के ऊपर सरकार ने formalization पे ध्यान दिया है, तो इसको देख के लग रहा है पिछले कुछ quarters में कि real estate लौट कर आ रहा है. देखो जो मैं तुम्हें बोल रहा था, न्यू लॉन्चेस ये है और सेल्स का ये नंबर्स हैं. तो अगर आप इनको कंपैरिजन करोगे, द न्यू लॉन्चेस, इफ यू लुक एट 1920, द न्यू लॉन्चेस आर नाउ मच हायर compared to this zone of 1920, because even before COVID pandemic, real estate was doing very badly with a lot of inventory piling up, with a lot of difficulty in getting clarity on the projects, lot of projects incomplete, and due to that people losing confidence in real estate, many companies going bankrupt in real estate. तो जो कोविड के पहले भी रियल एस्टेट में कोविड आया ही हुआ था, रियल एस्टेट के लिए पैंडेमिक ही चल रहा था भारत में 2017-18 से, हालत बहुत बुरी थी. लेकिन कोविड के बाद थोड़ा अभी अगर हम इस ट्रेंड को देखें तो यहाँ से चीजें पिकअप करनी शुरू हुई हैं. एंड मे बी द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ब्रॉट इन बाय द गवर्नमेंट, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाइक रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट, GST benefits for real estate, allowing real estate Swamitwa kind of schemes being launched. So some structural reforms being brought in have created some benefits for real estate sector. Then the unsold inventory or inventory overhang that we say, कि ये जो unsold inventory है, ये हमें दिख रहा है कि अभी भी around 8 लाख के आसपास है, 50% of the total inventory. लेकिन जो इन्वेंट्री ओवरहैंग है, इन्वेंट्री ओवरहैंग का मतलब कि कितना आपने बनाया और कितने बेचने को रहते हैं, ये वापस अब
प्री कोविड लेवल पे आ रहा है, जो शो कर रहा है कि परचेज बढ़ रही है रियल एस्टेट की. सो दिस शोज सप्लाई फॉर रियल एस्टेट इज राइजिंग, दिस शोज डिमांड फॉर रियल एस्टेट इज राइजिंग. रियल एस्टेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर इन इंडिया. इट contributes around 4.5% to GDP and employs around 4% of the workforce. So that makes real estate and construction quite an important thing in India. And then if you look at initiatives on the Model Tenancy Act, digitization of land registries and market data, etc. If you see, this is another achievement that India is one of the top performers in transparency improvers in global real estate. ग्लोबल रियल एस्टेट में अगर ट्रांसपेरेंसी इंप्रूवमेंट की बात करें तो इंडिया वन ऑफ द टॉप परफॉर्मर्स में से एक है. तो दो सेक्टर्स अच्छा कर रहे हैं, आईटी, रियल एस्टेट. रियल एस्टेट इज कमिंग बैक ऑन ट्रैक. दैट्स द गुड न्यूज दैट वी सी इन दिस. Then if you see IT BPM industry, this is business process management, जैसे call centers हो गए, knowledge industries हो गई, and so on. So we see that with COVID-19, it has accelerated the pace of digital transformation. So people are using more complex technology, people are using now Internet of Things, people are using more gadgets, and all that promotes this sector quite a bit. And India's IT BPM sector has been quite resilient during the pandemic. With increased technology spending, accelerated adoption and digital transformation, even though demand in the West was not as high. So IT exports did not grow at the same rate as what they used to grow in the 2014, 15, 13, 12 years, but or 8, 9, 10 years even more so, but still domestic demand increased, global demand also, our IT sector could penetrate through the competition, and we have done pretty well when it comes to IT performance in India. If you look at geographical distribution, Americans are a big contributors to Indian IT demand. You see this 62% going with the Americans, and then Europeans of course demand another 11%. So Americans and Europeans are two big demanders of Indian IT, and UK of course 17%. तो अगर तुम देखो तो 90% of our total IT is only in these three places, but Americans are the biggest over there. And don't forget, America was in a bad slowdown, or has been in a bad slowdown in the last couple of quarters. तो ये असर डालेगा हमारे IT पे फ्यूचर में. और साथ में अगर सेगमेंट वाइज ब्रेकअप करें तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स आर द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर्स. अगेन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखोगे? बिगेस्ट मार्केट एंड बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर इन टर्म्स ऑफ सेगमेंट्स. अगर ये दो बातें तुम्हें याद रह जाए हमारे लिए काफी है. ये जो डायग्राम्स में तुम्हें शो करता हूं, इनके ट्रेंड भी याद रख लो तो हमारे लिए काफी है. Just remember the trends, which sector dominates, which is the second highest, which is the third highest, which country dominates or region dominates, which is the second highest, which is the third highest. That will also do things for us without any doubt. Then another thing we see is the growth for IT and BPM industry has been driven with increasing penetration of Digitech, that is one, and made in India digital first solutions. Also margin defense through operational excellence, and that margin defense through operational excellence means that India could operate better, Indian companies, and therefore they could protect their profit but still outcompete the other companies from other countries. And then digital talent nation with also Startup India program promoting a lot of digital talent in India, and then leading in hybrid work models. In India also we saw a lot of hybrid work happening, work from home, work in office, go digital. Education is one big example. I am connected digitally to you, and we have offline classes also that goes on. So, all that implies that overall IT BPM could go much better. Another very important industry in India is e-commerce. India's e-commerce market projected to grow at 18%, that's huge, annually through 2025. मतलब अगले 5 साल में डबल हो जाएगा e-commerce जहाँ है वहाँ से. और e-commerce का मतलब क्या होता है? All trade through electronic medium. आप में से जिनको भी लगे कि अच्छा सर लेकिन ये e-commerce का मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ all trade through electronic medium. Then of course expansion to newer segments like grocery, fresh to home fruits and vegetables, all those Blinkit and Grofers and whatnot, all of them coming over. And then even the smaller players now coming into picture, customer base rising, digital solutions being adopted for MSME. So many MSME have gone digital, and that has increased our digital commerce.
And then e-commerce business in rural India driven by smartphone penetration, internet adoption and increased purchasing power of rural customers. So अगर आपसे कोई कहे ई-कॉमर्स इंडिया में क्यों बढ़ रहा है तो ये 3 कारण आप दे दोगे जिससे आपको मेंस जैसे एग्जाम में भी 80-90 वर्ड्स यहीं से मिल जाएंगे. So expansion of newer segments, adoption of digital solutions and e-commerce business in rural India driven with smartphones, digital internet penetration and increased purchasing capacity of the people. And then if you see government e-marketplace has shown another change, 160% growth in government e-marketplace, now touching almost 1 lakh crore worth of sales. Another is one district, one product. If you recall, we discussed about it earlier, that government has brought in this one district, one product program, ODOP program, mainly discussed when I was teaching you current affair program in our next IAS session. Then also I had taught you this. वो मुझे बड़ी खुशी हुई आप लोगों को वो करंट अफेयर्स पढ़ाने में 4 क्लासेस ये नेक्स्ट आईएएस पे हमारी कोशिश रहती है that we as senior teachers pick it up and teach you things so that you can gather more momentum in your current affairs preparation. Anyways, hope to see you for the question answer session on current affairs also very soon. I will be meeting you in say 1st, 2nd May kind of time. Okay, coming to this now, so one district, one product is another one. Tribal Cooperative Marketing Federation has been included. An open network for digital commerce has been included. So ONDC is one big change. वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट तो खैर अब 2 साल से चल रहा है देश में. ओएनडीसी एक बहुत बड़ा चेंज है. ये ओपन नेटवर्क होगा, कोई भी आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कंज्यूमर को फायदा ये होगा कि उनके सामने सारे प्राइसेस रहेंगे और वो पार्टिसिपेट. तो ये ओएनडीसी को कहा जा रहा है दैट इट कैन डू द सेम इन डिजिटल कॉमर्स व्हाट यूपीआई हैज डन इन डिजिटल पेमेंट एंड आई एम वेरी अगेन कॉन्फिडेंट अबाउट दैट वी कैन डू दैट. देन if you look at, so just this diagram for your understanding, that we see that by 2027 fashion, grocery and general merchandise will capture almost 2/3 of the market. अभी 2022 को अगर देखें तो already almost half of the market इन्होंने capture कर रखा है, लेकिन अगर 2027 तक देखें तो ये करीब 2/3 of the market capture कर लेंगे. तो ये ऐसे ही मैं चाहता था कि तुम्हारे दिमाग में रहे that most important sectors will be fashion, grocery and general merchandise. And that shows that we are shifting our demand from one place to another. एक बात और दिमाग में रखना, कुछ लोग इसमें कहते हैं लोकल किराना स्टोर का क्या होगा. कुछ नहीं होगा, बढ़ोतरी होगी क्योंकि वही सर्विस पार्टनर्स बनते हैं इसमें. और जो बहुत छोटे किराना स्टोर्स हैं धीरे धीरे हमें कोशिश करनी चाहिए कि वो धीरे धीरे होगा, 10 साल में होगा. बट हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ना खुलें देश में. इनकी जगह जो लोग इसमें काम करते हैं उन्हें बेहतर नौकरी मिले, बेहतर बढ़ोतरी मिले, ग्रोथ मिले. छोटे किराना स्टोर एक सिम्टम होते हैं देश के कम डेवलप्ड होने का, क्योंकि वो साबित करता है कि लोगों को अल्टरनेटिव नौकरी नहीं मिली तो इस काम में फंसे हुए हैं. तो ये दिमाग में रखिएगा आप जरूर. देन ऑफ कोर्स द डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक जैम ट्रिनिटी, यूपीआई, that is another development. Digital banking units that have been set up, ये चर्चा भी हम लोग कर चुके हैं अभी जब मैं आपको करंट अफेयर्स पढ़ा रहा था. बट फिर से तुम्हें बता दूं, डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स में 11 पब्लिक सेक्टर बैंक, 12 प्राइवेट सेक्टर बैंक और 1 स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये 24 बैंक ने मिलकर 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट इंडिया में क्रिएट किया है. 11 public sector banks, 12 private sector banks and 1 small finance bank. And these digital banking units will help in penetrating banking in remote areas, help in penetrating banking to rural areas, help people in gathering the information about banking, and they will not need any brick and mortar office. So that will save the administration cost, fixed expenditure cost and so on. So that is again a good futuristic development that we are talking about. And then of course the introduction of central bank digital currency. That will boost digital financial services, because in this case the RBI itself will be a supplier of digital currency, and that will mean a lot of digital payment transactions will be utilized. UPI has already become the largest in the world, so that's a big achievement India is showing. So in conclusion, in service sector growth, what we see that it was highly volatile during the COVID year, but after 23 we have seen that there has been the release of pent-up demand. Pent-up demand is demand which had been suppressed all these days. लोगों को होटल जाने को नहीं मिल रहा था, मूवी हॉल जाने को नहीं मिल रहा था, टूरिज्म के लिए नहीं मिल रहा था, वो डिमांड रिलीज हो रहा है और हायर ग्रोथ नजर आ रही है. Ease of mobility restriction has happened. Now people can move faster. Universal vaccination coverage has also resulted in
encouraging more people to go and demand contact intensive services. Remember, we are bothered so much about services because India is a service-led economy. Services contribute more than 50% of GDP, employ more than 26% of population. So India will have to remain conscious that service growth has to be promoted. So overall, if we have to develop a $5 trillion economy, services is something that we need to focus upon. All right, then if we talk further, if we go ahead in that, chapter 11 on external sector, and the heading given is we are watchful and hopeful. Watchful because the global situation is going down, don't forget. पहले chapter में चले जाना, वहाँ मैंने discussion किया है. Interest rate is rising all over the world. Russia-Ukraine war is happening. Monetary contraction means demand will fall in the other places of the world. So all that means that demand will get compromised. And COVID has not completely gone away. It still keeps coming back in different variants. So that still keeps puncturing many contact-intensive services and many manufacturing supply chain networks. So all that is creating issues still. That is why watchful, but hopeful because India's exports have shown a huge resurgence. अगर मैं आपसे share करूं, तो इंडिया के जो exports हैं, goods and services both, in 2019-20, it was $535 billion, where goods were $330 billion and services were $205 billion. And by 2021-22, we see goods rising to $423 billion. सरकार ने अब ये release किया है final numbers. This is for goods. Services rising to around $256 billion. And total to around $679 billion. And by 2022-23, this year, we see total rising to $770 billion. Services rising to, goods rising to around $447 billion. And services to $323 billion. So it shows that India's exports have shown a lot of resilience. क्योंकि 2022-23 के second quarter onwards decline in demand की story शुरू हो गई थी commodities में. तो services ने काफी मदद की है हमारी. But otherwise, the decline in demand story is continuing to a great extent. All right. In introduction, they say that there have been two global shocks. There has been an economic shock mainly in terms of the oil price increase, metal price increase, and there has been a health shock. That is the pandemic shock. But some economic shock has been positive also, like demand has started picking back. Anyways, now external sector buffeted by shocks and uncertainty, like tightening international financial condition. सब देशों ने अपने interest rate बढ़ाने शुरू कर दिए. Heightening financial market uncertainty. Volatility in financial market, the stock markets fluctuating a lot, reversal of capital flows, money leaving India to a great extent, our currency depreciating against dollar, but not depreciating against other foreign currencies, which meant that our imports were becoming cheaper, costlier, but our exports were not becoming that much cheaper. डॉलर के खिलाफ तो हमारी currency depreciate कर रही थी, लेकिन बाकी currencies के मुकाबले में हमारी currency अप्रिशिएट कर रही थी, और हम बाकी करेंसीज के साथ खूब compete करते हैं ग्लोबल मार्केट में, तो वो हमें कहीं ना कहीं एक नुकसान पहुंचा रहा था. तो ये भी हमें एक थोड़ा देखना पड़ा, एक स्लो डाउन अपने सिस्टम में. But India has been able to face these headwinds, and global trade has shown a slowdown, but India has shown some headwinds, and that has meant that our fiscal deficit has not been bad. Our current account deficit has been in control in spite of all the challenges we have had. Inflation has not been as bad as in the West. So all that means that investment started coming back. Trade did not fall very badly, and we could remain resilient in spite of these situations. So if you ask me, externally, it is still a comparatively better system in spite of a very bad world. Now, in the presence of globalized and integrated world, trade is essential for developing countries. Mind you,
unless a country doesn't record a high export growth, there is no historical, I repeat, no historical fact showing that a country has done very well and grown in the zone of 7, 8, 9%. जो भी country बहुत fast grow हुई है, वो export को साथ में लेकर ही grow हुई है. इसीलिए भारत export को ignore नहीं कर सकता और हमारे पास scope भी बहुत है. We are hardly controlling 2%, mind you, 2% of global export market. We can export to East Asia, we can export to Australia, New Zealand, we can export to Middle East and North Africa, we can export to Latin America. Big market still waiting for India. So as we diversify our exports, I'm sure we will be able to do pretty well. In the meantime, मैं तुम्हें कुछ information दे देता हूँ. इंडिया के top 3 export destinations जो हैं, वो इस साल 3rd नंबर बदल गया है, इसलिए मैं ये बता भी देता हूं तुम्हें. USA नंबर 1, UAE नंबर 2 and Netherlands number 3. China has now gone to number 4 in our export markets. और जो import sources हैं इंडिया के top 3, उनमें China is number 1, we import the maximum from them. UAE is number 2 and USA is number 3. So these are our top 3 export destinations and import sources. Prelims के point of view से अपने दिमाग में रख लोगे. In prelims exam they can sometimes ask you these questions. So from prelims point of view, just make sure you are keeping it in your mind. And that is what it shows, that if you look at India is growing and India is diversifying. So if we look at 1991 and India's performance then compared to the world, and if we look at now and India's performance compared to the world, there is a lot of convergence. You know, we see a lot of convergence between the two, India's performance and global performance. Starting 1991, there was a huge distance here, but if you see, this distance goes on becoming lesser. So today we are much more convergent with the world with respect to trading factor as compared to what we used to be, you know, as a percentage of GDP. Global percentage of GDP, trade as a percentage of GDP is 56.5%. India now trades, or trade as a percentage of GDP calculate कैसे होता है? Export of a country plus import of a country divided by GDP. This is trade as a percentage of GDP in 200, of course. So now India shows a lot of convergence with global system, which is good news because it means that if global trade picks up, India will also get benefited out of that. Then if you see, if we look at trade in services, एक ये चाहता था कि आप थोड़ा समझ के चलो. तो अगर आप trade in services के numbers देखोगे, you know, trade in services के numbers देखोगे, तो यहाँ पर मैं चाहता था बस एक दो चीजें तुम notice करो. एक तो IT सर्विसेज जो हैं वो सबसे ज्यादा डोमिनेंट हैं, ये वाले टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज. दे आर द मोस्ट डोमिनेंट among all the services that we see. And apart from that, financial services slightly dominate. There is some dominance of other business services, and of course transportation services. You know, ये transport dominate करता है, other businesses dominate करते हैं. Other businesses हो जाते हैं accounting and law, legal services and all. तो लेकिन ये हमारे कुछ dominant services हैं. But IT is the most dominant one if you look at it among services. तो याद क्या रखोगे exam point of view से? IT is the most dominant, then other business services, and then transport. 1, 2 and 3. IT, other business services, and then transport. ये तीन बातें तुम्हें याद रखनी है. That will be sufficient for us. And then if I look at India's global trade engagements, all the FTAs list is what the economic survey gives us. India, UAE, CEPA, India, Australia, CETA, the economic trade and cooperation and trade agreement, the free trade agreements with 13 countries, preferential trade agreements that we have 6. And then India is also engaged in India, UK, India, Canada, and India, European Union FTA. We are very close to finalizing FTA with UK, at least the initial deal. और जब भी आप किसी country के साथ close होते हो,
तो कभी कभी आप कहते हो अर्ली हार्वेस्ट डील। अर्ली हार्वेस्ट डील में आप कहते हो चलो पूरा डील साइन नहीं करेंगे, लेकिन जितनी चीज़ों पे समझौता हो गया है उन्हें फाइनलाइज कर देते हैं, तो उन्हें कहा जाता है अर्ली हार्वेस्ट डील। All right, that we may not sign the entire deal immediately, but there can be few things on which we agree to each other, and that will be called an early harvest deal. So India and UK are very close to having an early harvest deal. Then of course balance of payment, if we look at, we have done quite badly over the period, but that was expected. अब इसमें एक interesting thing याद रखना, कोविड पैंडेमिक के वक्त हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव, करंट अकाउंट पॉजिटिव में चला गया था। इसमें खुश होने की बात नहीं है, ये इसलिए गया था क्योंकि इंपोर्ट गिर गए थे, और इंपोर्ट गिर गए थे क्योंकि हम गिर गए थे, हम डिमांड नहीं कर रहे थे बहुत ज़्यादा, इसीलिए इंपोर्ट कम थे, और इसीलिए बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो करंट अकाउंट सरप्लस में था। जैसे पैंडेमिक खत्म हुआ, डिमांड ने पिकअप किया, अगेन द करंट अकाउंट बैलेंस गोज इनटू negative, which is expected. This year it was expected to do very bad current account balance, but thankfully due to resurgence in service combined with a lot of inflow of remittances from abroad has meant that current account balance in India has shown a negative of around $100 billion, $120 billion. $120 billion is less than 4% of our GDP. Now that's not a very good news, but good news is we have had $100 billion worth of inflow of investment. So overall pressure on foreign exchange will be relatively lesser. So that is something good for India. And mainly if you ask me, that the real problem that comes is from merchant trade balance. अगर तुम देखो यहाँ पर भी ये merchant trade balance heavily negative में है, और net exports जो है, exports from net factor income from abroad जो है वो negative में है। तो याद क्या रखोगे, net transfers, that is remittances and all, remain plus in India, net services income remain plus in India, but merchant trade, merchandise trade remains minus, and net factor income from abroad remains minus. Prelims के point of view से ऐसी ऐसी बातें हरकतों पे उतरा हुआ है UPSC आजकल, इसीलिए तुम्हें ये ग्राफ्स देता हूँ, that net merchant trade balance negative, net factor income from abroad negative, but net services and net transfers positive. That is the combination of balance of trade, current account balance in Indian context. Then of course, when we look at remittances, as I told you a little while back, India is receiving one of the highest remittances in the world. And you know, one other thing that is happening is, a lot of these remittances are now coming from USA. Earlier, a lot of remittance would come from Middle East, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait. Even today, remittances come from all these areas. But USA is becoming one of the biggest contributors of remittances. Singapore is becoming a big contributor to remittances, which shows diversifying diaspora of India. ये जो remittances की contribution हमें देखने को मिल रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इंडिया का diverse diaspora show करता है कि कहीं ना कहीं हमारा जो नंबर है, जो पीपल है, वो दुनिया भर में अब घूम रहे हैं और वहाँ से पैसे इंडिया आ रहे हैं, और ये काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है इन कंट्रोलिंग करंट अकाउंट डेफिसिट. द मनी दैट वी रिसीव फ्रॉम अब्रॉड प्लेज अ बिग रोल इन कंट्रोलिंग करंट अकाउंट डेफिसिट. And then if you look at capital account balance, again you see the net capital balance has shown some positivity here, you know, even though it has come back because investments गिर गए इंडिया में quarter 2 22-23 onwards. क्यों गिर गए investments? इसलिए गिर गए क्योंकि foreign economies में slow down आ गया. So since there was a slowdown in foreign economy, the investments have gone down. If you look at it again, the net loans have always more or less remained positive. Most recent देख लो, net foreign investment positive, net loans positive, but net banking capital negative, and net other capital negative. Net other capital is like how much money you reinvested in India, what amount of profit did you take away from India. So we see that at the moment, since West is in distress, a lot of profit is not invested back in India, they are taking it away. We see a lot of demand happening for Indian system quite a bit. तो ये सब चीज़ें भी देखने को मिल रही हैं. ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक है इंडिया के अंदर अभी एक्सटर्नल फ्रंट पे. स्पेशली अगर आप देखें तो बोरोइंग की रिक्वायरमेंट फिर से बढ़ी है इंडिया में, और ये हमें थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ेगा कि ये ज़रूरत से ज़्यादा ना बढ़े. Our borrowing requirements have gone up considerably, and we have to be conscious that it shouldn't rise a lot. Of course, it's still under control, but external sector is always volatile.
We can't print dollars. We are trying to internationalize rupee. I'm very soon going to bring a video on internationalization of rupee for you, hopefully by the next week itself. तो hopefully वो आपको थोड़ा मदद करेगा. वो YouTube पे ही video लाऊंगा मैं for internationalization of rupee and the efforts done by India and all. But this is something again that we need to get careful about, that India has to control its foreign exchange reserves well. India has to manage its inflation well. Most importantly, encourage more investments in India in FDI and encourage a lot of trade going out of India. एक्सपोर्ट को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है और एफडीआई को देश में इनकरेज करना बहुत ज़रूरी है, तो हम अच्छा कर पाएंगे करंट अकाउंट पर भी और कैपिटल अकाउंट पर भी. इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि बीओपी पे हमारा एक सरप्लस रहा है ओवरऑल काफ़ी दिनों तक. ये सारे बीओपी सरप्लस के टाइम है. बीओपी का डेफिसिट, करंट अकाउंट तो डेफिसिट में रहा, कैपिटल अकाउंट ज़्यादातर सरप्लस में रहा है. ओवरऑल बीओपी डेफिसिट लेकिन 22-23 में देखने को मिला. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो पाइल अप किए गए थे वो चले गए और इसीलिए पाइल अप किए गए थे. अगर कोई आपसे बोले फॉरेन एक्सचेंज इज एट अ 3 ईयर लो, 3 ईयर लो मत सुनो, बोला अच्छा 5 साल पहले कितना था. मैं इसलिए तुम्हें ये बात बता रहा हूँ क्योंकि जब कोविड पैंडेमिक आया तो हम सबको पता था कि जब पैंडेमिक रिसीड करेगा तो वॉलेटिलिटी आएगी और बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज हमारे देश से बाहर जाएगा. इसीलिए आरबीआई ने 2020-21 में और 21-22 में खूब सारा फॉरेन एक्सचेंज एक्यूमुलेट किया और उसको $600 बिलियन के ऊपर पहुंचा दिया. अब लोग क्या कर रहे हैं, लोग कहते हैं 2 साल में ये सबसे कम फॉरेन एक्सचेंज है. मान लिया आज हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है $570 बिलियन. At the moment, India's foreign exchange reserves are $570 billion. If somebody says, oh look, this is the lowest at which India has reached, or this is very low compared to 2 years back. 2 years back, we were deliberately accumulating foreign exchange. Compare it to where we were in pre-COVID days, even 2019-20. So even in 2019-20, the total foreign exchange reserve was around $400 billion. Compared to that, we are 40% more. कोविड पैंडेमिक आने के बावजूद, सारी उठापटक के बावजूद, अगर हम 2019-20 से कंपेयर करें तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $140 बिलियन ज्यादा है. श्रीलंका की टोटल जीडीपी का दुगना है ये. उतना हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ गया है पिछले 5 साल में. लेकिन हम लोग रोने पीटने वाले लोग हैं. तो जब कोई चीज में गलती दिखानी होती है तो कहते देखो देखो प्री कोविड के लेवल के मुकाबले कहाँ है. ये देखने से कोई फायदा नहीं कि कोविड के मुकाबले कहाँ है. और जब यहाँ पर प्री कोविड के मुकाबले हायर हो गए हैं, देखो देखो 2 साल के मुकाबले कहाँ है, प्री कोविड के मुकाबले नहीं देखेंगे. तो ये रोने पीटने की आदत छोड़नी चाहिए, बेटर एनालिसिस करना चाहिए. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वी आर इन अ कंफर्ट जोन. आवर इंपोर्ट्स आर टोटल अराउंड $790 billion. We have 80% imports covered by foreign exchange reserves. Our total borrowings are $600 billion. We have approximately 90% of borrowings covered by foreign exchange reserves. So we are in quite a decent zone with respect to forex. So that is the thing that economic survey also highlights, that import cover, कितने महीने का import आप ले सकते हो अपने foreign exchange reserve से, उस मुकाबले में इंडिया के पास करीब करीब 8-9 महीने के import के बराबर का पैसा है, जो कि काफी comfortable माना जाता है. Then of course the exchange rate has moved with global development. पर यही मैं चाहता था तुम लोग देखो कि जितना रूपी डॉलर के मुकाबले डेप्रिशिएट हुआ, उतना ज़्यादा पाउंड, येन या यूरो के मुकाबले नहीं डेप्रिशिएट हुआ है. As much as rupee has depreciated against dollar, but for pound, yen, etc., rupee has not depreciated as much. So if you will see, rather in this zone, rupee was appreciating against these currencies, as it is rupee per unit of foreign currency. Rupee by dollar, rupee by yen, rupee by euro, ये बात हो रही है. तो अगर देखा जाए पाउंड स्टर्लिंग के मुकाबले कुछ दिन अप्रिशिएट हुआ, फिर डेप्रिशिएट. लेकिन अगर डॉलर को देखो तो ऑलमोस्ट थ्रू आउट एक डेप्रिशिएटिंग ट्रेंड बना हुआ है. अगेन इन टर्म्स ऑफ यूरो, इट अप्रिशिएटेड फर्स्ट, देन काइंड ऑफ डेप्रिशिएटेड. येन इट अप्रिशिएटेड, देन डेप्रिशिएटेड. और अगर बांग्लादेशी टाका, वियतनामी क्रॉन, इनसे कंपेयर करूं तो अप्रिशिएट कर गया है. और इन कंट्रीज से हम compete करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, इनसे नहीं करते. जापान से एक्सपोर्ट में compete नहीं करते. हम लोग रोबो बना के नहीं बेच रहे हैं. हम यूएस से compete नहीं कर रहे हैं. हम compete कर रहे हैं नाइजीरिया, वियतनाम. ये हमारे यहाँ जो टाई वाई कोट लगा के अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं, उनकी इज्जत को फर्क पड़ जाता है ये बात जानने से. लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है, तभी पता चलेगा कि एक्सपोर्ट क्यों पिकअप नहीं कर रहा करेंसी डेप्रिशिएट करने के बाद भी उतना ज्यादा. क्योंकि करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है अमेरिकन करेंसी के खिलाफ. अमेरिका से नहीं compete करते हम लोग ग्लोबल मार्केट में. वी डोंट compete with the Americans in global market, in export market that is. We compete with
with Vietnam, Bangladesh, Nigeria, Brazil, China, and against these currencies our currency has not depreciated as much. So that is what we should be conscious about. डॉलर रूपी कंपेयर कर करके माथा पीटना छोड़ना चाहिए. पॉलिटिशियंस करें, मुझे समझ में आता है, उनको इकोनॉमिक्स कम आती है, लेकिन या इकोनॉमिक्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लाइफ में उनके, हमारे लाइफ में नहीं होनी चाहिए, कम से कम मेरे तो नहीं है फॉर ऑब्वियस रीजंस. तो इसीलिए आपको ज़रूरी है समझना कि ये एनालिसिस समझो दैट रूपी हैज़ ओवरऑल अप्रिशिएटेड अगेंस्ट मेनी कंट्री करेंसीज, डिप्रिशिएटेड अगेंस्ट डॉलर. तुम ऐसे पकड़ लो, पाउंड के साथ ही पकड़ लो, तो जहां पाउंड के साथ रूपी पहले था ऑलमोस्ट वहीं पहुंचा है और इस बीच में अप्रिशिएट कर गया. तो ये समझना जरूरी है कि जब कोई कहे देखो रूपी तो डिप्रिशिएट कर गया, रूपी तो डिप्रिशिएट कर गया, दैट इज व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड. सो रूपी विल हैव टू डिप्रिशिएट इन रियल एक्सचेंज रेट टर्म्स टू मेक थिंग्स कंपैरेटिवली मोर कॉम्पिटिटिव फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स. Adequate amount of forex is almost what we have. हाई मार्केट बोरोइंग, साहिल अगेन तुम सोचो, ये जो अखबार की लैंग्वेज तुम लोग यूज करते हो ना, मुझे बड़ा प्यार आता है तुम लोगों में. कंसिडरिंग वी हैव हाई मार्केट बोरोइंग, व्हाट इज द नंबर? ये सोचो क्या नंबर है, क्या है मार्केट बोरोइंग. अब गूगल सर्च करोगे जब मैं बोलूंगा तो हाई मार्केट बोरोइंग्स जो इंडिया के हैं वो है करीब $450 बिलियन. बट वो देने का ओनस क्या आरबीआई पे है? नहीं, वो देने का ओनस किसके ऊपर है? प्राइवेट सेक्टर पे. उनकी सिरदर्दी वो जाने. Why should India maintain a foreign exchange reserve for private sector borrowings? India की गवर्नमेंट ने कितना बोरो किया फॉरेन एक्सचेंज? 19% ऑफ जीडीपी. You know, that is our total foreign borrow, Indian market. और इंडियन गवर्नमेंट ने कितना बोरो किया? उसमें से 3% ऑफ जीडीपी. अब 3% ऑफ जीडीपी क्या है? करीब करीब $100 बिलियन. तो सरकारी बोरोइंग क्या है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की? $100 बिलियन. हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है? $600 बिलियन के करीब. क्यों चिंता करें? ये अखबार में लिखते हैं कंसिडरिंग हाई फॉरेन बोरोइंग, कंसिडरिंग मार्केट. ये सब लिखने का तरीका होता है हमें आपको मूर्ख बनाने का, सोच कर कि अच्छा थोड़ी अच्छी अंग्रेजी लिखो तो और साथ में थोड़ा फ्लारी एडजेक्टिव ऐड कर दो तो लोगों को लगता है हाँ मैं कुछ पढ़ा तगड़ा. विभास सर इज अ वेरी हार्ड वर्किंग ऑर्गेनिक टीचर. बोला अच्छा ऑर्गेनिकली टीचर है, अरे ये तो कुछ तगड़ा काम करते होंगे. कुछ नहीं हूं मैं, पढ़ाता हूं तुम्हें, यही मुझे आता है दुनिया भर में करना, वो भी मुझे लगता है कि मुझे आता है, पता नहीं आता है या नहीं, लेकिन बस पढ़ाता हूं तुम्हें और तुम्हारे बेसिस पे चलता हूं. तुम लोग प्यार करते हो तो मुझे हिम्मत मिल जाती है ये सब पढ़ा लेने की तुम लोगों को. सो दिस इज द बेसिक आइडिया. हमेशा सब लोग, और ये साहिल के क्वेश्चन को मैंने जानबूझ के एलोंगेट किया, कुछ चीजें डेटा से देखो. तुम्हें याद होगा मैं क्लास में भी हमेशा ये बोलता हूं, डेटा इज द की. इंडियाज टोटल फॉरेन एक्सचेंज बोरोइंग्स आर $610 बिलियन. मैं तुम्हें ले ही आता हूं उसी चीज पे. जो हमारे इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशंस हैं और बोरोइंग पोजीशन है, तुम ये देखो तो एक्सटर्नल डेट सिचुएशन में सरकार का जो डेट है वो ये तो कुछ दिखता है $124 बिलियन. ये एक्सटर्नल जनरल गवर्नमेंट, ये उनका है. सेंट्रल प्लस स्टेट जो टोटल है इनका जो डेट है, और इसका और टोटल ग्रॉस एक्सटर्नल डेट है $610 बिलियन. $610 बिलियन is 19% of our GDP, which is one of the lowest in the world. ये जो $610 बिलियन है, ये जीडीपी का 19% है, ये दुनिया भर में सबसे कम में से एक है. वी शुड बी हैप्पी अबाउट इट. ऐसे ही जो सरकार की बोरोइंग्स हैं, ये 3% ऑड ऑफ जीडीपी है, अ लिटिल मोर देन दैट, वन ऑफ द लोएस्ट इन द वर्ल्ड. गवर्नमेंट हैज अ लॉट ऑफ स्कोप टू बोरो if you ask me in a foreign market. So we are not at the moment challenged with foreign exchange loans. इस $610 बिलियन में से $478 बिलियन लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, मतलब 5 साल 10 साल 20 साल के लिए, कोई फ्लक्चुएशन का डर नहीं. शॉर्ट टर्म लोन्स 131 बिलियन. अब तुम लोग सब लोग सोच के देखना, आवर टोटल इंपोर्ट रिक्वायरमेंट का अगर 6 महीने का भी रख लेता हूं इंपोर्ट, सुनना खूब ध्यान से, अगर 6 महीने का इंपोर्ट रिक्वायरमेंट भी बात करें कि 6 महीने तक कोई पैसा नहीं आया देश में तो भी हम इंपोर्ट के पैसे देते रहे 6 महीने तक, सोच के देखो. सो इवन इफ वी प्लान अ 6 months import coverage, that even if no money comes to India for 6 months we can pay $400 billion. Even if we believe no money comes to India, an entire money has to be given from our own pocket for short-term foreign loans, $130 billion, total $530 billion, foreign exchange reserve $600 billion, almost $570 billion, तो भी $40 billion एक्स्ट्रा है हमारे पास. नहीं है डरने की जरूरत, नहीं तो मैं डराता तुम्हें. मत कोई भी लोग कोई बोले तुम्हारे सामने तो ये डेटा कोट करो और बोलो कि भाई एक बूढ़ा सा आदमी बोल रहा था क्लास में कि डरने की कोई जरूरत नहीं है और ये सब डेटा बता रहा था. डेटा को कोई कंफ्लिक्ट करे तो मैं मान सकता हूं. तो ये समझने की जरूरत है, ये हमारे यहाँ डर की खेती होती है. ये हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसे हो गया.
उतना डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसका ये मतलब नहीं हम कंप्लेसेंट हो जाएं, तभी तो मैंने कहा promote investment and go for export promotion. If we can do those two things, we can do pretty well for ourselves. USA doesn't need a foreign exchange reserve. They can print money and world can buy them. You know, that is the idea. All right. Then of course there is another thing, the debt ratio. यही इसी की बात मैं तुमसे कर रहा था। देखो 19% गवर्नमेंट डेट टोटल, और जो इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल डेट, that is 97%, you know, and total external debt as percentage of GDP 20%. All these indicators show quite a healthy trend. ये सारे indicators काफी healthy trend दिखाते हैं। इसके लिए हमें बहुत डरने की जरूरत नहीं है। You know, short term debt are very small. Among these short term debt, government debt is even low. Debt as a percentage of GDP is very small. So all that is a healthy situation for India. At the moment, we don't need to worry. Yes, we need to be conscious that our structural reforms go on, industrial development goes on, we produce well, income goes up. ये नहीं कह रहा हूँ कि इसलिए आप चादर तान के सो जाएं आराम से, नहीं, वो हालत में तो अभी देश पहुंचा ही नहीं है। लेकिन इतना भी डरने की जरूरत नहीं है कि चादर में आग लगा के घर के बाहर भाग जाए। अखबार पढ़ता हूं तो मुझे कुछ ऐसा ही लगता है कि कोई गलत पासपोर्ट हो गया मेरा, या मैं कुछ गलती कर दिया वापस आकर देश में। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अखबार ऐसा छापेंगे क्योंकि ये जरूरी है, डराएंगे तब तो 12 रुपए चार्ज करेंगे ना एक दिन के, तो हम देते भी हैं उनको, फिर नोट्स बनाते हैं उसमें से। एनीवेज, आई डोंट मीन एनी डिसरिस्पेक्ट, बट समटाइम्स इट मेक्स मी फील अ लॉट ऑफ फन व्हेन आई लुक एट द वे दे रिपोर्ट एंड ऑल द एडजेक्टिव्स एंड एक्रोनिम्स दैट दे ऐड। Anyways, if you compare it, rather, we are doing much better than the emerging markets. Chinese, of course, are big time suppliers of foreign exchange to the world. In fact, they are very rich in foreign exchange terms. Of course, they do better than us. And Russia is an oil importer. Russia does better than us in terms of ratio of money that they have compared to foreign exchange. But look at India, we are doing no worse. और हमारे यहाँ oil नहीं है, और हम कोई बहुत बड़े manufacturing powerhouse नहीं है, तो भी हम अपने इंपोर्ट्स का काफी कवरेज अपने लोन्स का काफी कवरेज कर रहे हैं अपने फॉरेन एक्सचेंज से। सो एज एन इंडियन आई फील डिसेंट अबाउट इट। बट व्हाट शुड बी द आउटलुक? सो कॉशियस अमिड्स ग्लोबल हेडविंड्स, यही मैं तुम्हें अभी बता रहा था। एक्सपोर्ट आउटलुक विल रिमेन फ्लैट। अगर मुझे पूछो तो मैं ये करेक्ट करूंगा, एक्सपोर्ट्स एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन इन नेक्स्ट ईयर। अगर मुझे पूछो, मेरा ये असेसमेंट है, ईश्वर करे मैं बिल्कुल गलत हो जाऊं और अगले साल तक रशिया यूक्रेन वॉर थोड़ा ठीक हो जाए और डिमांड पिकअप कर ले, पर मेरा असेसमेंट है कि जितना एक्सपोर्ट हमने, गुड्स की बात कर रहा हूं, सर्विसेज का शायद पिकअप कर ले, बट गुड्स का जितना एक्सपोर्ट अभी किया इस साल उतना भी नहीं पहुंच पाएंगे अगले साल। दैट्स माय असेसमेंट, दैट वी विल नॉट बी एबल टू इंक्रीज आवर एक्सपोर्ट्स एज मच एज व्हाट वी हैव दिस ईयर। सो वी शुड tighten our belt and be willing to accept a little more current account deficit next year, and therefore we need to maintain our foreign exchange reserves, etc. Also, we need to increase domestic demand quite a bit so that the GDP grows well and the parameters don't look bad. But India's external debt vulnerability indicators are benign. Benign का मतलब soft, जो खतरनाक नहीं है, और ये तो मैं अभी आपको समझा ही रहा था। Good coverage of loans, government loans are very low. Even the amount of percentage of GDP taken from foreign as loan is very low. So that way India does pretty good. And to sum up, while India's external sector faces challenges, it is performing relatively better as compared to many of its peers. इससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि हम लोग बहुत सारी दूसरी कंट्रीज से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मेरी दिक्कत बस ये है कि बाकी की बहुत सारी कंट्रीज बहुत ही घटिया परफॉर्म कर रही हैं। So performing poor when others are pathetic is a solace, no doubt, but it cannot be taken as something to pat our back on. You know, ये समझना कि हम पीठ नहीं थपथपा सकते अभी अपनी, क्योंकि हम घटिया में खराब हैं। तो ठीक है, घटिया नहीं है, खराब कर रहे हैं। हमें ध्यान रखना होगा कि हमारे एक्सपोर्ट्स पिकअप करें ज़्यादा। We need to push our exports more, especially commodity exports. We need to diversify the basket as well as market. We need to make sure structural reforms for industries are done as quickly as possible in India. We need to make sure that infrastructure development that has been going on should go on as quickly as possible. All the announcements regarding national logistics policy, announcement regarding Gati Shakti, announcements regarding infrastructure pipeline should be done as quickly as possible. Investment manufacturing zones should be revived.
all these things will be needed as soon as possible. मैं क्यों ये बातें डर डर के तुम्हें बोल रहा हूँ, क्योंकि अगला साल है इलेक्शन आने का, और तब तक या तो लोग पुरानी दिल्ली में पानी पूड़ी खाएंगे, या फिर लोग चले जाएंगे कहीं कहीं इनॉग्रेशन करने को, किसी स्टेट में जाकर वहाँ का दूध पी लेंगे। जो मिनिस्टर्स भी हैं प्रधानमंत्री से लेकर नीचे तक, वो भी इन्हीं किसी काम में लगे रहेंगे ताकि सिम्बॉलिज्म्स हाई रहे, तो ऑपोजिशन और गवर्नमेंट दोनों ही बिजी हो जाते हैं पॉलिटिक्स को लेकर, तो इकोनॉमिक्स मार खाती है। 2019-20 अगर तुम्हें याद हो, स्लो डेवलपमेंट ईयर, क्योंकि इलेक्शन ईयर था। 18-19 भी कंपैरेटिवली लो डेवलपमेंट ईयर। 13-14 पे भी यही हालत थी, लो डेवलपमेंट ईयर। तो ये मुझे थोड़ा डराता है that the air of elections in India becomes so acrimonious these days in the last one decade, 13-14, 18-19, 19-20, 14-15, that we have seen growth stumbling. So I just hope I'm proven wrong and politicians smell the coffee and they realize that world is in a bad shape, so India cannot afford being lax. I'm sure people will be more responsible. I'm very hopeful about people because intelligent लोग हैं, politics चलाते हैं, देश चलाते हैं, intelligent होंगे ज़रूर। तो लेकिन मेरा ये सोचना है कि अगर ये बना रहे तो हम अच्छा कर सकते हैं। हाँ, अच्छी बात क्या है, सरकार के अगर पक्ष में बोलूं तो एक अच्छी बात क्या देखने को मिली कि इलेक्शन ईयर होते हुए भी फिस्कल डेफिसिट नहीं बढ़ाया, इलेक्शन ईयर होते हुए भी पॉपुलिस्ट स्कीम्स नहीं लाए, तो डेफिनेटली एक मिक्स नजर तो आ रहा है। सो उम्मीद है that opposition will also be responsible and government will also be responsible, and rather than fighting about unnecessary things, we can make sure we do better. बजट बिना किसी डिस्कशन के पास हो जाए, ये इकोनॉमी के लिए अच्छा सिम्टम नहीं होता। ये जानबूझ के तुम्हें एक क्रक्स बता रहा था मैं, क्योंकि इसके साथ ही मेरा इको सर्वे का लेक्चर खत्म होता है। चैप्टर 7 का जो समरी है is in the description. It is all climate and everything. It did not have much economics in it. So I've given you the summary of chapter 7 in the description. It will be more than sufficient from prelims etc. point of view. Thanks a lot. You have been a great support in this entire journey, which kept me going, and a huge thanks to my entire team, people who were in technical team, people who were developing the content, and so on. I wish I could have made you meet all of them because they are the real heroes. I am just the person speaking in front of you. They are actually the people, people are managing content, people are managing technical teams. मैं बस आता हूँ, आपसे बात कर लेता हूँ, जो थोड़ी बहुत economics जानता हूँ, share कर लेता हूँ. So hopefully we'll see you very soon with a new YouTube video. Thanks a lot and keep loving Next IAS as the love you are giving us at the moment this year also. Huge turnout of students. Thanks a lot. Thank you. Bye-bye. See you then.